Assalamu alaikum 10th class. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 18th July 2020. Our topic of discussion is drug introduction into the body and its consequences. ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह ड्रग इंट्रोडक्शन जब बॉडी में होती है तो क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं. Most people will take a pill, receive an injection, or otherwise take some kind of medicine during their lives, but most of us don't know anything about how these substances actually work. How can various compounds impact the way we physically feel, think, and even behave? For the most part, this depends on how a drug alters the communication. ओके इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह हम ड्रग जो है वो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ऑरली भी करते हैं और हम इंजेक्शन के थ्रू भी करते हैं और समटाइम्स हम इनहेलेशन के थ्रू भी करते हैं. ठीक है, तो किस तरह वो हमारे हार्ट को, ब्रेन को और हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है हम नहीं जानते हैं इसके बारे में. Between cells in the brain. There are a number of different ways that can happen. But before it gets into the brain, any drug must first reach the bloodstream on a journey that can take anywhere from seconds to hours, depending on factors like how it's administered. The slowest method is to take a drug orally, because it must be absorbed by our digestive system before it takes effect. Inhaling a drug gets it into the bloodstream faster, and injecting a drug intravenously works quickly too, because it pumps. ओके बेटे, इसमें अब उन्होंने बताया है कि किस तरह जब हमारी बॉडी में ड्रग एंटर होता है तो वो अपने एक्शन के लिए उसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना पड़ता है. ठीक है, अगर हम कोई ड्रग लेंगे ऑरली यानी हम उसे खाएंगे उस ड्रग को, ठीक है, कोई मेडिसिन होगी या कोई सिरप होंगे, तो पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, उसके बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हेलेशन करेंगे यानी इनहेल करेंगे उसको तो वो ज़्यादा जल्दी से हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और अगर इंजेक्ट करेंगे तो वो भी जल्दी ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि जब हमने इंट्रावेनस करना है तो वो हमारी वेन्स में जाएगा. ठीक है, और जिसके ज़रिए वो जल्दी से हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा. ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ब्रेन तक पहुंचना है और फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है. The chemicals directly into the blood. Once there, the drug quickly reaches the gates of its destination, the brain. The entrance to this organ is guarded by the blood brain barrier, which separates blood from the nervous system to keep potentially dangerous substances out. So, all drugs must have a specific chemical composition, which gives them the key to unlock this barrier and pass through. Once inside, drugs start to interfere with the brain's normal functioning by targeting its web of neurons and synapses. Neurons are brain cells that have a nucleus, dendrites, and an axon. Synapses are structures placed along the dendrites or the axon, which allow the exchange of electrochemical signals between neurons. Those signals take the form of chemicals called neurotransmitters. Each neurotransmitter plays different roles. ठीक है, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल्स को. ठीक है, तो अब जब न्यूरो ट्रांसमीटर उन सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये जो ड्रग एंटर हुआ है ब्रेन में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. ठीक है, और कहीं पर जो ये सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल ही नहीं जाने देगा और कहीं पर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स जो है वो क्रिएट करेगा. ठीक है, यानी डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा इन द वर्क ऑफ ब्रेन. In regulating our behaviors, emotions, and cognition, but they all work in one of two ways. They can either inhibit the receiving neuron, limiting its activity, or excite it, creating a new electrochemical signal that spreads throughout the network. Any leftover neurotransmitter usually gets degraded or reabsorbed into the transmitting neuron. A drug's effectiveness stems from its ability to manipulate these synaptic transmissions at different phases of the process. That results in an increase or a decrease in the amount of neurotransmitters being spread. For instance, common antidepressants, like SSRIs, stop the reabsorption of serotonin, a neurotransmitter that modulates our moods. This effectively pushes more of it into the neural network. Meanwhile, painkillers, like morphine,
raise levels of serotonin and noradrenaline, which regulate energy, arousal, alertness, and pleasure. Those same neurotransmitters also affect endorphin receptors, reducing pain perception. And tranquilizers work by increasing the production of GABA to inhibit neural activity, putting the person in a relaxed or sedated state. What about ठीक है, ये ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो था, ठीक है, कि जैसे अब फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, उनकी प्रोडक्शन को उसने रोकना है या उन्हें वापस भेज देना है, ठीक है, और सिग्नल्स का जो पाथवे था उसे डिस्टर्ब करना। उसके अलावा जब भी ये ड्रग्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हमें इनकी आदत हो जाती है, हम एडिक्टिव हो जाते हैं और विदाउट दीज हम रिलैक्स नहीं कर पाते। और जब ये ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है, और जो एनर्जी बूस्टिंग हो जाती है हमारी, और जो हमारे अंदर हमारा जो ब्रेन है वो भी बाद में स्लो हो जाता है। लाइक अगर हमें रेस्टिंग सिचुएशन चाहिए, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है कि हमारा दिमाग ना सोचे, तो हम वो पेन किलर्स ज़्यादा ले लेते हैं या स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में लेकर चले जाते हैं, ठीक है, और हमारे माइंड को स्लो कर देते हैं। illegal or illicit drugs? These have powerful impacts on the brain that we're still trying to understand. Crystal meth, an amphetamine, induces a long lasting release of dopamine, a neurotransmitter linked with the perception of reward and pleasure. It also activates noradrenaline receptors, which increases the heart rate, dilates pupils, and triggers the body's fight or flight response. Cocaine blocks the reuptake of dopamine and serotonin, pushing more into the network where they boost energy, create feelings of euphoria, and suppress appetites. And hallucinogenic drugs have some of the most puzzling effects. Substances like LSD, mescaline, and DMT all block the release of serotonin, which regulates mood and impulsivity. They also have an impact on the neural circuits involved in perception, learning, and behavioral regulation, which may explain why these drugs have such powerful impacts. Even if some of these effects sound exciting, there are reasons why some of these drugs are highly controlled and often illegal. Drugs have the power to alter the brain's chemistry, and repeated use can permanently rewire the neural networks that support our ability to think, make decisions, learn, and remember things. There's a lot we still don't know about drugs and their effects, both the good and the bad. But those we do know about are the ones we've studied closely and turned into effective medicines. As our knowledge grows about drugs and the brain, the possibilities will also increase for treating the many medical problems that puzzle researchers today. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जो डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स हैं वो किस तरह अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जिसमें हमने कोकेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोकेन जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है। इसी तरह दूसरी ड्रग्स एडिक्टिव और सेडेटिव ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जो हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं तो हम उनसे बच सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका हमें नहीं पता, और जितना हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे उतनी हमारी नॉलेज में इसकी इंक्रीमेंट होते जाएगा, हमारी नॉलेज में इनका इजाफा होता जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कोई ऐसा ड्रग भी हो सकता है जिसका हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो, ठीक है। तो उससे जानने के लिए या उसे देखने के लिए हमें सिर्फ जो प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग्स होती हैं उनका ही यूज़ करना है, ठीक है, और उसके अलावा ख़ुद से कोई यूज़ नहीं करना ड्रग्स का, ठीक है। और प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग भी जिनके बारे में आप जानते हो, ठीक है, और नेट से सर्च करें अबाउट दैम। और इसके अलावा जो आपके पास मेडिसिन होती हैं उनके बॉक्सेस में एक लीफलेट होता है, ठीक है, जिसमें इंडिकेशंस होती हैं। उस इंडिकेशन में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, डोजेज भी लिखी होती है, तो उसको काइंडली गौर से पढ़ लिया करें बिफोर द इनटेक ऑफ ड्रग्स। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।